Good evening, one and all. SGF is very happy in the year 2022 inviting. This is the first event for the calendar year 2020. SGF stands for Study Group of Acquaintances and Fellowship. Now, acquaintance means we have the acquaintances. We are not friends, but we want to do fellowship. So let's come together and explore the potential of each other. That was the idea. Daman Bhai is our founder member. We started this activity in 2018. Limpal was also part of that SJF, Badrej Bhai, and so on and so forth. Some of us, 15-20 members, wanted to have a classroom study, and due to the our COVID breaking out, everything has now become virtual mode. And I think somehow blessing in disguise, the virtual is working for us. And today we thought कि how opening batsman कौन होना चाहिए, नए साल में क्या होना चाहिए. So then we thought of Jai Prakash Tiwari, JP. We usually call him. So JP will like to. He said कि Vandana, something new. What is happening? What is in thing today's time? Everybody is talking about crypto. Everybody is talking about blockchain. So can we not try to have some informal discussion on that? And I think I grabbed that opportunity. Even our coordinating team also said, yes, let's go. Daman Bhai also said, Vandana, nothing best can be thought of to start with. So I will ask Darshita Maru to introduce our today's first, the very first meeting person is Jai Prakash Tiwari. Over to you, Darshi. So hi everyone. Good evening and a warm welcome to the sessions. I know that the word crypto is all we want to understand these days, and we are excited about it. May it be an investor or a new person to the investing world, or or a trader. Everybody wants to invest and earn from the cryptocurrencies, but we do not understand how it works. Like, so today we are there. We are having a very good speaker with us. So I take this pleasure to introduce our speaker of the day, Jai Prakash, CA Chartered Accountant Jai Prakash M. Tiwari. He is a practicing chartered accountant and he practices in the area of FEMA, ROC, anti-dumping duty, DGFT, etc. But nowadays, he is a crypto enthusiast, and no wonder he gives a daily update on the crypto ecosystems on his YouTube channel, that is News Capsule. Thank you, sir, for joining us today. So now I will also give you a brief about CA Vandana Dodia. So she is a practicing chartered accountant with more than 23 years of an experience. Her expertise are basically into a technologies, and more, she is more into a tally. She's a tally evangelist and she's a motivational speaker. She's also part of an advisory group of the Borivali Central CPE Study Circle. She has addressed around more than 100 study circle meetings for our WIRC. So now I hand over the session to Vandana Dodia and Jai Prakash sir, so that they can give us a wonderful insights on how crypto works, and we can be a potential investors. Thank you. Thank you. Shall we start? Thank you for the nice introduction. And to give the rights of sharing the screen, but to start with, first most question mine will be what you mean by crypto. That will be my first question to you. चालू start एकदम start शुरू से ही बता तो चले what you mean by crypto. Thank you all. Thank you Darshita. Thank you Vandana madam and SGF team for inviting me to express my views. Let this session be interactive, as this is a very hot topic, and almost everybody want to know what is crypto, what is blockchain, NFT, metaverse, everything. All new world is coming. So let this be interactive. You also express your thoughts. I will express my views, and whatever I have studied, I will put before you. So let us discuss. So पहला तीर आपने छोड़ दिया है वंदना मैडम. What is crypto? So let me ask audience what they understand about crypto. Let everybody express in 1 minute
सब लोग बोलिए, लेट सबको अनम्यूट कर दीजिए, लेट एवरीबडी एक्सप्रेस देयर व्यूज। एक एक शब्द, सी सबने क्रिप्टो वर्ड तो सुना ही होगा, सो व्हाट Digital यू script. अंडरस्टैंड? I feel that is a digital script tradable. वेरी गुड, गुड आंसर। दमन भाई काय बोलो, व्हाट यू नो अबाउट क्रिप्टो? It's a digital currency used it worldwide without using the monetary terms. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली गुड। किसी ने इसके बारे में गलत नहीं सुना है? कोई क्रिप्टो नेगेटिव है? कोई, मेरे तो काफी फ्रेंड बोलते हैं वो इट इज इन द एयर, इज मेड जस्ट लाइक दैट विदाउट एनी बेस, इलीगल, ये सब वर्ड नहीं सुना है। सो लेट मी एक्सप्रेस, लेट मी शेयर माय स्क्रीन and let us discuss one by one. Yeah. So मैंने क्या क्या सुना है शुरू में, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने क्या क्या सुना था? Crypto do not have intrinsic value. They are not supported by the sovereign guarantee. Absolutely right. They are not supported by any sovereign guarantee. Government is not supporting. They are scam, Ponzi scheme, fraud. Crypto is fraud. Crypto is mother of all government. ये जो भी मैं आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है, ये सब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने एक्सप्रेस किए हुए व्यूज है, जो कि बाद में 180 डिग्री का टर्न लेके पलटी मार चुके हैं। लेट अस सी एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। लास्ट में किसी ने कहा था इट विल कोलैप्स। Now, in my view, so you mean to say the world will go? So what can be the new world? You know? yeah, Going to collapse. that was expressed by some expert. It will collapse. In my view, crypto is, or you are, see, in my view, whatever I've studied, every slide is based on fact and thorough research, and wherever I've expressed my view, it will be expressly mentioned. So in my view, crypto is a reward. It is a digital code which can be transferred but cannot be copied. It can be transferred, but it cannot be copied. So with this, let us proceed. Let me show you where the world is going. वंदना मैडम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, where the new world is going. So the new world, in new world, there are play to earn games. Play to earn games means you earn while you play. Axie Infinity एक ब्लॉकचेन बेस्ड गेम है। ये फिलीपींस में इतना मशहूर हो गया था कि people were leaving their jobs and playing game of Axie Infinity, and they were earning huge money. और गवर्नमेंट ने जब देखा कि ये लोग जॉब छोड़ के इतना बड़ा पैसा कमा रहे हैं, they are just out of playing of game, they are earning huge money, गवर्नमेंट ने फिलीपींस में उसके ऊपर न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस किया. So this is what virtual lands are being bought and sold. Virtual land, can you imagine virtual land is being bought and sold? Avatars can meet and discuss like just like हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग जगह पे बैठे हैं, but in metaverse we can make avatars and we can send all avatars at one place. जो virtual
मीटिंग रूम हो सकती है, वर्चुअल मीटिंग रूम में सब लोग एक इकट्ठा जाके बैठ सकते हैं, एंड वी कैन डिस्कस जस्ट लाइक फिजिकल मीटिंग. In Tamil Nadu, there was a marriage reception in metaverse. 500 लोग इसमें शामिल हुए थे. मेटावर्स में मैरिज रिसेप्शन, वर्चुअल लाइव म्यूजिक concerts are being organized. So there are many ये यहीं पर अटक नहीं जाएंगे हम. Nike is constructing showroom in metaverse. और उसमें क्या करेगा Nike will sell their accessories, but वो तो physical है, metaverse में कैसे sell करेंगे? So they will make virtual accessories. Who will buy these accessories? Our avatars. मतलब हम जो metaverse में दूसरी दुनिया में पहुंचेंगे, तो our avatars will like to wear good clothes, accessories, or that will be sold by Nike. And not it will be, it is being sold, and people are actually buying these virtual accessories. Can you imagine where the world is going? Apple Pay, Samsung Pay, all are introduced, are linked with crypto now. Adidas, जब Nike आ गया, Adidas आ गया, तो परसों Puma ने भी डिक्लेयर कर दिया कि we are also in metaverse now. You see, PwC, okay, PwC Thailand, Pricewaterhouse, that big four, one of the big four of Thailand, has bought virtual land. Can you imagine? And Helium hotspot का बताता हूँ. अपने वाईफाई का रेंज कितना जाएगा? Maximum 500 kilometer. Helium hotspot is such a device that its range is several kilometers, 70 kilometers. Can you imagine? 70 kilometers तक वाईफाई का रेंज जाएगा उसका. So we are in this kind of world we're living right now, and the adoption is increasing day by day, my friends. Warner Music, Disneyland, Disney के CEO ने डिक्लेयर कर दिया है ऑफिशियली, they will be constructing a new Disneyland in metaverse. Where are we? Where are we? We are sitting in front of computer just making governmental compliances. Web 2 का compliances कर रहे हैं हम लोग governmental का. And we are just sitting as it is. And the world is moving so fast. China ने, yeah, please. So you were telling about China. First, you finish that. China ने बैन कर दिया था cryptocurrency and whole ecosystem, mining and everything they banned. वो बड़ा news में था. And crypto market was also fell 20-30% at that time. But you know, Chinese local governments are using blockchain. They are using blockchain for their own record keeping. And China ने, जो previous slide में मैं बताना रह गया, China के जो central China Central Television CCTV, ये नेशन स्टेट ओन्ड ब्रॉडकास्ट मीडिया है, और they have issued NFT, and these NFTs are being quoted at 10 times their basic price. China में we have banned their crypto ecosystem, वहां पर हो रहा है. And where are, so you were asking me? No, but that's it, man. I mean, the world is, I think, moving. So many examples you gave, where the crypto is already taken, entered, paved the way. So now, what can be? My mind says, what is smart contract, or what is NFT, metaverse?
प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, ये सब इन सबके ऐसे सवाल आ रहे हैं, तो क्या आपके पास, हाउ यू विल बी टेकिंग अस अहेड, मतलब आपने एक साथ में ये सब पूछ लिया है। ये जो सब है तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से बाउंसर जा रहा है। देयर आर टर्म्स लाइक क्रिप्टो, फियाट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये सब टर्म्स का जो डेफिनेशन है, ये आपको टर्मिनोलॉजी, ये सब कोइन गेको एक एप्लीकेशन है, मोबाइल में भी यू कैन डाउनलोड, coingecko.com में जाके आप ग्लोसरी में आप चेक कर सकते हैं। ये सब का मीनिंग अलग अलग से बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ है। We will be covering some of these aspects, not all, but some. But इसमें staking, I don't know whether we will get time, but staking is very, very important. It is just like making fixed deposit. So staking भी बहुत important है समझना. But let us go one by one. Madam, next question. Muted. Is it banned by government or how? Whatever you are trying to tell us today, is it open by the government? All central banks are against this new technology, or if you can share with us, what are the learned people are talking about this? Yeah, very important. Very important. It is not banned by government. It is only in China it is banned. In Russia, it was proposal from Chinese central bank, but Putin ने ये उड़ा दिया था before the war. But it is not banned by any government. China ने भी ban किया है, but people are using it and government themselves are using it. So what learned people are saying. 1984 में, प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1984 से ये सब चल रहा है, इसके भी पहले से चल रहा है। 1984 में नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट F.A. हयाक ने क्या कहा है? I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hands of government. Before we take the things out of the hands of the government, that is what a learned person is saying, novelist is saying. And what he said is, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop. ये कौन बोल रहा है? This notable person is saying. इसके बाद है डेविड चाउम। डेविड चाउम क्रिप्टो करेंसी के फादर माने जाते हैं। कुछ लोग इसके भी पहले से ऑलरेडी क्रिप्टो के ऊपर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन डेविड चाउम ने काफी आगे प्रोग्रेस किया था और एक आर्टिकल लिखा है 1985 में। आर्टिकल का हेडिंग जस्ट आप रीड कीजिए, सिक्योरिटी विदाउट आइडेंटिफिकेशन, ट्रांजैक्शन सिस्टम टू मेक बिग ब्रदर ऑब्सोलीट। ट्रांजैक्शन सिस्टम टू मेक बिग ब्रदर ऑब्सोलीट। सतोशी नाकामोटो ने, जो कि इन्वेंटर है बिटकॉइन के, उन्होंने जब फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिया था, उस टाइम पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था, announcing the first release of Bitcoin, a new electronic cash system that uses peer-to-peer network to prevent double spending. It is completely decentralized with no server or central authority. मतलब central authority, control, server, government, central bank, ये सब के अगेंस्ट में ये सब हवा चल रही थी बहुत पहले से। अराउंड 1971 से ये सब चल रहा था, जब यूएस वाज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। वो भी हम लोग कवर करेंगे आगे क्या हो रहा है। सो दिस इज व्हाट लर्नेड पीपल आर सेइंग।
So why there is so much distrust, you know, like against banks and intermediaries prevailing in the society? Yeah. Why there is a So distrust? या distrust, ये मैं शॉर्ट में कहूंगा कि ये उनके कर्मों का फल है, ये सब जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, एंड नॉट ओनली एक्सपर्ट्स, जनरल पब्लिक वाज ऑफ दिस काइंड ऑफ व्यू, एंड दैट इज व्हाई एक्सपर्ट्स ने इस तरह के व्यू दिए हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये उनके कर्मों का फल है. तो आपने तीन Financial expert का intermediaries, अच्छा financial intermediaries and banks and central banks and all that, they misuse the trust, or they breach trust of at various occasions. और इसलिए इस तरह का हवा was there, air, I mean there was distrust in the society. So my next question is कि आपने ये तीन एक्सपर्ट का बताया, दूसरे एक्सपर्ट्स का पॉजिटिव नेगेटिव है क्या ओवर एंड अबव दिस? हाँ, बहुत ज्यादा, काफी एक्सपर्ट्स का, ये जो पहले मैंने जो फर्स्ट स्लाइड दिखाया था एब्यूज का, ये सब एक्सपर्ट्स के व्यू थे. अभी उसमें एक एक हम देखेंगे नेगेटिव कमेंट्स, एंड देयर आफ्टर देयर 180 डिग्री टर्न. ओके, जो भी एक्सपर्ट ने, जितने भी एक्सपर्ट ने जो भी गालियां दी थी, नाउ दे आर इनटू द इकोसिस्टम ऑफ क्रिप्टो. मतलब हम लोग हिंदी में बोलते हैं पलटी मारना. तो ये क्लियर कट पलटी मारा हुआ है. गोल्डमैन सैच ने बोला था इन तो ये सब है ना, जो भी नेगेटिव हवा चल रही थी, ये 2015 से लेके 2019 तक सब नेगेटिव हवा चल रही थी, बाकी सबकी हवा निकल गई. गोल्डमैन सैच ने बताया था क्रिप्टो इज नॉट अ वायबल इन्वेस्टमेंट. और अब क्रिप्टो क्या बोल रहा है, अब गोल्डमैन सैच क्या बोल रहा है, बिटकॉइन विल टेक मार्केट शेयर अवे फ्रॉम गोल्ड इन 2022 as digital assets become more widely adopted, Goldman Sachs analysts have predicted, and Bitcoin will most likely become bigger proposition. मतलब ये गोल्डमैन सैच ने टोटल यू टर्न लिया हुआ है. किसी का हैंड रेज हुआ है, विपुल करके, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क, वी कैन हैव discussion. Thank you so much. Yeah. So my question was, we as a layman are not able to visualize on why should there be such a premium be paid on such digital currencies like crypto or Ethereum. Why can't the government in future, I mean, what is the possibility that the government in future will come up with say digital currencies and which can be used in blockchain, and which will in turn reduce the importance of bitcoins or the current digital currencies. So Right. that was my question. Yeah. Right, absolutely, very important question, and my answer to this is CBDCs, that is central bank digital currency, and crypto both are on blockchain. That is one similarity, but there are 10 different differences between the two that we will have to understand. Major difference is crypto is decentralized, whereas whatever government introduces will be centralized one. It will be on blockchain, but it will be under control. And the philosophy of crypto is no control, no trust, no intermediary. That is the philosophy. So we will see this in detail as we progress. I have explanation to all this. Let us proceed. You will get the answer. I mean, you yourself will get the answer out of forthcoming slides. So Mark Cuban, Shark Tank, सब लोग ने उनको टीवी पे देखा होगा. मार्क क्यूबन ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, आप सुनने लायक है. I can trade banana easier than
easier as a commodity, then I can trade Bitcoin. मतलब banana मैं easily खरीद सकता हूँ. And he was totally against crypto, and he was considering crypto as financial pyramid scheme. अभी मार्क क्यूबन क्या कर रहे हैं? He is recommending investors to invest at least 10% of their investable wealth in cryptocurrencies like Bitcoin. Complete U-turn. अभी उन्होंने एक 15 days back एक स्टेटमेंट दिया था कि वो मुझे भी जरा exaggerated लगा, but it was in the public domain. उन्होंने कहा था कि he is investing up to 80% of his net investable wealth in crypto. थोड़ा disconnect है उनका, but right now he is suggesting investors to invest at least 10%. जेपी मॉर्गन का स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, सुनने लायक है. जेपी मॉर्गन was in September 2017. Jamie Dimon, CEO of JP Morgan, said crypto is fraud and eventually it will blow up. अभी JP Morgan बोलते हैं कि Bitcoin is better than physical gold. Bitcoin is better than physical gold. Can you imagine the U-turn? Bill Gates. See, I'm taking the name because everything is on public domain and all statements are recorded, earlier statements as well as current statements. It can be vouched, it can be Googled, and you will find everything clear. Bill Gates says that he will short Bitcoin. He will never invest in it. He appears to be against crypto, but actually he is not. Microsoft and Ernst & Young, E&Y, expand blockchain platform for gaming. Microsoft and Engine ने partnership की है. Engine is a coin gaming network है, वो gaming blockchain है. और once upon a time, मतलब in while he was introducing Windows 95, he had approached David Chaum, जो हमने पहले देखा. David Chaum was cryptography expert. He had made one coin already. He had made at that time, and Bill Gates wanted to correlate. I mean, he wanted to integrate the DigiCash with Windows 95, and he had offered $100 million to David Chaum at that time, which was denied. So all these are recorded there. We will not spend much time. Guru, the world's investment guru, Warren Buffett sir. हमको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है उनके लिए. February 20 में उन्होंने कहा था, Bitcoin is like a rat poison. I don't own any cryptocurrency and I never will. That is what the recorded statement is. February 22, 2022 में अभी Berkshire Hathaway जो उनकी कंपनी है, उन्होंने just reveal किया है कि they have invested $1 billion in Brazilian fintech who is directly investing in cryptocurrency. So with this, we can say that everyone has made a U-turn. Everyone has made a U-turn. So, madam, any question on this? So we are trying to understand that someone was first taking offense and now they all are behind it. So you can also just they are into it. They are into it now. They are now vouching for it, basically practically. Yes.
So And the question of CBDT versus crypto, I have already made a video on that. So you can go to my channel and view that. I have described all 10 differences in my video. Bharat sir has asked a first time investor. Our mentor, CA Bharat Desai, is with us. He is also running Shopbox Talks, and he only culminated the idea of Chai Pe Charcha in SGF. And he has Correct, a question: how can one invest first time investor? So I think this is the question we will park for now for the last Q&A. पहले हमें समझना है क्या क्रिप्टो है, क्या ब्लॉकचेन है, और हम ऐसे इन्वेस्टर कैसे उसको डील कर सकते हैं. Correct. अभी तो हमने देखा है सब ने यू टर्न मारा है. आपका नेक्स्ट स्लाइड मुझे कुछ इंस्पायर करे. Next slide. Before we go to next slide, एक small clarification. क्रिप्टो में जस्ट इन्वेस्ट करना यही एक अपॉर्चुनिटी नहीं है. There are hundreds and thousands of opportunities in crypto ecosystem. I have made a slide on that also. मतलब क्रिप्टो बाय करना, लो में प्रॉफिट में सेल करना, that is not the only opportunity, right? So with this clarification, let us move to next slide. Yeah, so this is right. So ये गुजराती में कहते हैं crows are black everywhere. गुजराती में बोलते हैं कागड़ा बधे काला होय. हमें बॉस मार्टे वापरता था. So you must have heard that fraud happened earlier also. Because fraud is happening in crypto ecosystem, we just cannot negate this beautiful technology. Fraudsters were there earlier too. नटवरलाल ने ताजमहल 7 बार बेचा था, 7 बार. उन्होंने लाल किला बेचा है और पार्लियामेंट हाउस बेचा है. उस टाइम पे क्रिप्टो नहीं था. Still he could manage it. तो फ्रॉडस्टर्स कौवे रहते हैं ना, वो हर जगह काले ही रहते. So this is what is. So what our responsibility is to understand the ecosystem. Whatever biggies say, crypto is here to stay. So it is in our interest to learn just entire ecosystem, not just trading. So let us move this again to understand. So meaning of this slide is we must change our angle. That says, I think crypto is too risky proposition. Daughter says, मतलब जेमी डायमंड जो जेपी मॉर्गन के सीईओ थे, उन्होंने क्रिप्टो को फ्रॉड कहा था. उस टाइम पे उनकी डॉटर ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था एंड शी मस्ट हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी. 2015 में मेरी डॉटर ने मुझे बताया था कि लेट अस इन्वेस्ट इन क्रिप्टो एंड आई इग्नोर्ड. एंड नाउ at that time the value of crypto was the value of Bitcoin was $5,000. I think not in 2015 but in 2016 somewhere. At that time the value of Bitcoin was 5,000. Now at present today's rate of Bitcoin is around $39,000. So let us change the angle. We need to change our angle and then let us proceed. So now can you just throw light on blockchain? Yeah. So before that, we should understand 3 major concepts. First
I'll inform you about 25% rule. 25% रूल हमारे एंशियंट इंडिया में ना 25% का इन्वेस्टमेंट रूल था एंड पीपल वेर फॉलोइंग इट. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने ये सब रिसर्च करके निकाला है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू जस्ट लिसन टू इट. तो 25% रूल एंशियंट इंडिया में क्या कहता है? 25 पैसे. इफ यू अर्न 100 पैसा, देन हाउ टू स्पेंड दैट 25% पैसे से ऋण चुकाओ, 25 पैसे से ऋण दो, 25 पैसे जमीन में गाड़ो, 25 पैसे कुएं में डालो. नाउ कैन यू इमेजिन, जमीन में गाड़ो, कुएं में डालो, ये सब इन्वेस्टमेंट रूल है क्या? बट यस, वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब सांकेतिक है. ऋण, फर्स्ट रूल में ऋण का मतलब होता है डिस्चार्ज योर ड्यूटीज. यू पे 25% फॉर to discharge your duties towards your parents, your country and society. Next 25% ऋण दो. जो ऋण है वो है take care of your responsibilities. Family is your responsibility. जिस तरह से हमारे पेरेंट ने हमारे लिए किया, वैसे हम हमारे बच्चों के लिए, हमारे फैमिली के लिए करें. So that is to you spend 25% for your family. जमीन में गाड़ो 25%. Keep out of reserve. Very well advised. You should keep 25% of your earning out of your normal reach. जमीन में गाड़ो. Keep out of your normal reach for future contingencies. कुएं में डालो, कुएं में डालो. कुआं, what is well? Well means well generates water. Water is resources. Resources मतलब you invest in such an asset which generates income. तो ये सब सांकेतिक लैंग्वेज. तो ये these are ancient rules of investment. तो 25% modified rule क्या कहते हैं? ये ICAI का, सी इंस्टीट्यूट का एक सेमिनार था कप परेड में जो मैंने अटेंड किया था. उसमें ये कहा गया था 4 इन्वेस्टमेंट रूल उसमें भी डिस्कस किए थे. परसेंटेज कैन वेरी. यू कैन वेरी द परसेंटेज एज पर योर विश, बट आई विल टेल यू द ऑप्शंस. कीप 25% in liquid, then invest in infra. Then third is you may invest in shares. May invest in shares. These were the words used by speaker. And the most important rule we should read again and again and again, for which this whole slide is made, is invest in an asset which is not the liability of anyone else. We'll read again. Invest in asset which is not the liability of anyone else. हम लोग इसको we'll have to revisit this. गुजराती में सेइंग है, मानस मात्र भूलने पात्र. ये सब जो इन्वेस्टमेंट रूल्स है ना, ये सब मैंने मैरिज के पहले लर्न किए थे. मैरिज के बाद जो है ना, एक ही रूल होता है, फॉलो द बॉस. That reminds me, today is JP's marriage anniversary. Yeah, thank you. Wish Thank you happy you. marriage anniversary. Yeah, thank you, thank you. 28 વર્ષ પૂરા કરી લીધા. 28. Yes, thank you. Great time. So, yeah. So let us proceed. Now, एक हमने देखा 25% rule. Now you see blockchain and crypto, ये बहुत पवित्र सब्जेक्ट है, बहुत पायस सब्जेक्ट, पवित्र सब्जेक्ट. इसके लिए आपका मन का बिल्कुल हल्का होना बहुत जरूरी है. माइंड में से सब कुछ आपको निकाल देना पड़ेगा. क्लोज योर आईज. ऐसा हाथ
हार्ट के ऊपर रखने का ऐसा। एंड अभी आप जस्ट देख लो, आपके बिहाफ में मैं एक्सरसाइज करूंगा एंड यू जस्ट वॉच के ऐसे हार्ट के ऊपर हाथ रखने का एंड आस्क ऑनेस्ट क्वेश्चन एंड आंसर ऑनेस्टली, हु इज इन पोजेशन ऑफ माय वेल्थ। तो एक एक करके एक एक देखेंगे क्या क्या वेल्थ होती है। कैश, I have 500 rupee note in my pocket, so I am holding it lawfully, and that is why I am in possession of my wealth. बैंक बैलेंस, बैंक में जो पैसा है उस पर सिर्फ मेरा साइन चलता है, उसमें वो चेक के ऊपर दूसरा कोई साइन करेगा तो बैंक विल बाउंस इट। सो बैंक बैलेंस इज एट माय डिस्पोजल, so I am in possession of my wealth at bank. प्रॉपर्टी में फर्स्ट नाम मेरा है, सेकंड नाम वाइफ का है, तो you can say I am in possession of my wealth because प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में, रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में मेरा नाम रिकॉर्डेड है। That is why I am in possession of my wealth. Jewelry, gold. My wife holds all jewelry gold. My wife loves me more than she loves gold and jewelry. ये important है ना? And that is why I can say I am in possession of my wealth. This question is very relevant for our discussion, and we will connect to you yourself will be able to connect to all this discussion as we progress. बहुत important point before understanding blockchain. Before understanding blockchain, बहुत important point है functions of money. Functions of money में फर्स्ट फंक्शन है, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर। ये हमको रटाया गया था, हमको पूरा याद है। मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर, कुछ भूल जाते थे तो MMSS ऐसा याद करना था, मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर। व्हाट इज मीडियम? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी का एक सबसे बड़ा फंक्शन है मीडियम, इट एक्ट्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना। कोई भी चीज हम एक्सचेंज करने के लिए मनी को यूज कर सकते हैं। मेजर और यूनिट ऑफ अकाउंट, कोई भी हम लोग के जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कीपिंग, तो हम लोग मेजर कर सकते हैं, किसी कोई भी चीज का वैल्यू हम रिकॉर्ड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, सो मेजर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट, मतलब आप ले लो कोई भी चीज का वैल्यू, जैसे MRP, कोई भी चीज मार्केट में बिक रही है, कोई प्रोडक्ट, उसमें MRP प्रिंट किया हुआ है, दैट इज इन मनी, सो इट एक्ट्स एज स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं पेमेंट के लिए। एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू दैट मीन्स इट स्टोर्स वैल्यू, मनी स्टोर्स वैल्यू। ये सब फैक्ट, ये सब हमने स्टडी किया हुआ है, करेक्ट। एंड माय ओपिनियन इज मैनी क्रिप्टोज मीट 3 आउट ऑफ 4 फंक्शंस। जो रेड में किया है वो स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट, वो इन माय ओपिनियन क्रिप्टो डू नॉट मीट दिस फंक्शन ऑफ मनी, and that is why in my opinion crypto is not currency, but will proceed as right now will proceed। So concept इसमें किसी को कुछ पूछना है इसमें? Anyone? नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट में रेड क्यों किया? चलो लेट अस प्रोसीड, हम लोग को बहुत कम टाइम पड़ेगा। कंसेप्ट ऑफ लेजर, बिफोर अंडरस्टैंडिंग ब्लॉकचेन, अगेन थर्ड कंसेप्ट इज लेजर। लेजर इज डिफाइंड, किसने बनाया लेजर, किसने बनाया?
4th century BC में अर्थशास्त्र was written by कौटिल्य. अर्थशास्त्र में मैंने डाउनलोड करके पूरा देखा हुआ है. अर्थशास्त्र में everything is mentioned. Record keeping, auditing, tax payment, and even assessment by government. That is also mentioned. Internal control is also mentioned. So अर्थशास्त्र में सब कुछ मेंशन किया हुआ है. And it was 4th century BC. और मॉडर्न अकाउंटिंग के जो जनक है वो कौन है? मॉन्क लुका पेसियोली, इटालियन मॉन्क है लुका पेसियोली. बट लुका पेसियोली ने जब अकाउंटिंग लिखा उसके बहुत सालों पहले इंडिया में ऑलरेडी अकाउंटिंग था. सो ये जस्ट हिस्ट्री थे. बट रिलेवेंट position is ledger. Ledger, what is ledger? Ledger is a database. Ledger क्या करता है? Ledger records, keeps record of transaction. Entire financial system is based on this ledger. Entire financial system is based on this ledger. So we understood 25% rule, then the pious exercise, function of money, concept of ledger. I'm still unable to understand what you are meaning by blockchain, exactly. Okay. So what is blockchain? That we want to understand. So friends, अभी main climax थोड़ा बढ़ रहा है. Let us understand blockchain and protocol. Fasten your belt. A technological storm is coming. Technological storm is coming. No one will be spared. No one will be spared means क्या? Means this blockchain technology will penetrate into each and every aspects of our life. Can you imagine? It will penetrate into each and every aspects of our life. Manufacturing, service industry, agriculture, education, medical, everywhere. You just name the industry. It will penetrate. क्यों? It is so much useful. चाइना ने ये बैन करने के बावजूद इसका यूज बंद नहीं किया है. इंडिया में भी यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट. You don't know. Biggest invention. This is biggest invention after internet. Blockchain technology is defined first in order to define Bitcoin. अच्छा, blockchain क्या है? अभी भी आप लोग को इतना मैंने बोला तो भी समझ में नहीं आया होगा. तो blockchain ये immutable, distributed, open ledger, then full stop. So blockchain is immutable, distributed, open ledger. बस ये चार वर्ड अगर हम समझ गए so we will understand the whole concept of blockchain. So be with me. We will go through everything. Immutable मतलब क्या? Immutable मतलब it cannot be changed. Distributed मतलब decentralized. Distributed मतलब एक जगह नहीं, बहुत जगह. Open ledger means everyone can see it. Open means everyone can see it. And ledger means a database. Ledger means a database. बस हो गया. हम लोग का काम खत्म. ब्लॉकचेन समझ में आ गया. ब्लॉकचेन समझ में आ गया. जो चेंज नहीं कर सकते हैं, जो कहीं से भी मिल सकता है और सबके लिए अवेलेबल है. करेक्ट. सब देख सकते हैं. Everyone can view it. सब देख सकते हैं. सब यूज भी कर सकते हैं. अच्छा, यूज भी कर सकते हैं. यूज भी कर सकते हैं. So what next is there in store for us? Next is this is the magic. आप बोलेंगे ये डेटाबेस है तो ये इसमें क्या मैजिक है? Correct. So there is a magic. There is a great magic. ये मैजिक है. ये ब्लॉकचेन जो है, this is the magic.
प्लीज बी विथ मी, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट। डेटा 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 हैश हैश ये डेटा है, ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक है। तो फर्स्ट ब्लॉक बन गया। फर्स्ट ब्लॉक, ब्लॉक मीन्स अ डेटाबेस। तो ब्लॉक कंटेन्स डेटा। ये डेटा जब ये ब्लॉक जब फिल हो जाता है उसकी कैपेसिटी से, फिर उसको क्लोज कर दिया जाता है एंड वन हैश इज जनरेटेड। ये सब मैं लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। I am also not technical person, but whatever I have learned that I am explaining you to easy understand. So ये close हो जाता है and इसके ऊपर एक automatic code generate होता है, that is called hash. ये hash एक tag होता है, ये block के ऊपर चिपक जाता है. It is attached to the block. फिर इसके बाद next block बनता है. नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर भी डेटा स्टोर होते, whatever transact the block can contain any type of data, any type of data, any format of data. So ये ब्लॉक में आ गया डेटा, ये फुल हो गया, ये इसको ग्रीन क्यों किया हुआ है? So the data hash is depending on the data it contains as well as the previous hash. Data it contains as well as previous hash. मतलब ये दोनों का मिल के नया हैश जनरेट होता है. फिर नेक्स्ट ब्लॉक बनता है, इसका अंदर जो डेटा है, दिस डेटा मतलब दिस हैश डिपेंड ऑन दिस डेटा एज वेल एज प्रीवियस हैश. ऐसे ब्लॉक के चेन बनती जाती है एंड they are attached to each other और एक पूरा सीरियल बनते जाता है. So this is a database. It is difficult or impossible to change. Why it is impossible? अब मैं सपोज इसमें कोई चेंज करूं, सपोज एक डेटा में मैंने यहाँ पर कोई चेंज किया, तो क्या होगा? ये हैश चेंज होगा बिकॉज हैश डिपेंड्स ऑन द डेटा इट कंटेन्स. इसके बाद ये हैश भी चेंज हो जाएगा क्योंकि दिस हैश डिपेंड ऑन डेटा एज वेल एज प्रीवियस हैश. तो प्रीवियस हैश चेंज हो गया तो नेक्स्ट हैश चेंज हो जाएगा. ऐसे फिर इसके बाद के सारे हैशेस विल चेंज एंड blockchain resides in more than one computer. वो सिर्फ मेरे कंप्यूटर में नहीं है. तो if I am making a change and if that my computer data do not match with the data in other computers, then other computers will reject my data. So everyone, each and every node are connected to each other. हम लोग देखेंगे आगे, we'll go as we progress, we'll see this in detail. This is just overall idea that data cannot be changed by a single node, right? So इसके there are ये technology के there are too many के use cases. मतलब ये टेक्नोलॉजी इतना यूजफुल है कि बहुत सारे इसके यूज केसेस है. और एक सबसे बड़ा यूज केस है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस. So can you elaborate what you mean by decentralized finance? Yeah, sure. So before understanding decentralized finance, let us understand centralized finance. This is one of the use case. Centralized finance में क्या होता है? They'll keep watch on our wealth. So we deposit our hard-earned money. Money is converted into ledger entry. Am I right? Money is converted into ledger entry. So between payer and pay, suppose Daman bhai want to gift me
तो डायरेक्टली गिफ्ट नहीं करेंगे, वो उनका वेल्थ पड़ा है बैंक में, तो बैंक का चेक देंगे. तो दैट मीन्स बिटवीन पेयर एंड पेइंग one intermediary is created, third party, trusted third party. So what third party holds? Third party holds trust. They hold trust. They hold wealth because they hold trust, right? So what are the functions of centralized finance? They are custodian of our wealth. They facilitate transaction, lending, and other related services without harassment, right? Without harassment. अब एक एग्जांपल लेते हैं सेंट्रलाइज फाइनेंस का. Dhawan bhai actually really is my friend, so he want to give 1 CR, Wow. 1 CR to me, Wow. right? And आपके Vanna मुंह में madam घी is शक्कर. also thank you. And Vanna madam is also my friend, so she also want to give me 1 CR. अब क्या होगा? गिफ्ट टैक्स कौन भरेगा? Dhawan, वो don't worry about that. So Dhaman Maika account and my account, if we have both of us account in same bank, State Bank of India, and in same branch, और वो चेक से मुझे देंगे, तो क्या होगा? कितना टाइम में मुझे वो पैसा मिलेगा? 1 मिनट में, क्योंकि आई विल डिपॉजिट द चेक इन माय बैंक अकाउंट. सेम बैंक में उनका है, तो इट विल बी वेरी फास्ट. व्हाई? Instantly transfer. बिकॉज इट इज इन द सेम लेजर. हम लोग का दोनों का अकाउंट है. अकाउंट मीन्स टेबल. अकाउंट मीन्स टेबल. सो टेबल, हम लोग दोनों का टेबल है इन सेम डेटाबेस. एक सिंगल डेटाबेस में हम लोग का टेबल है. एंड दैट इज व्हाई वो एक एंट्री या इधर से उधर होना एक फास्ट हो जाएगा. अगर वंदना मैडम पंजाब नेशनल बैंक में है, दूसरा ब्रांच, और मेरा बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक, आई विल हैव टू डिपॉजिट. तो कितने अकाउंट, कितने लेजर्स को अफेक्ट होगा? वंदना मैडम पीएनबी लेजर, पीएनबी के बैंक का लेजर, देन सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग सर्विस का जो लेजर है वो, and my bank's ledger. So 3 ledger will be affected, and that is why the transfer will take some time, and it will, and the cost will be attached to it, because से ट्रांसफर होना है, 1 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में आना है फ्रॉम वंदना मैडम, लेकिन it will be affecting 3 different ledgers. और इसलिए here comes blockchain. Decentralized finance. So there is a concept of single universal ledger. Blockchain में पूरे वर्ल्ड का एक लेजर है, पूरे वर्ल्ड का एक लेजर. Wherever people are there, they can transfer money to each other very fast. All participants have their table in one database, and there will not be any intermediaries. Transaction will be faster. Fast transaction तो समझ में आ गया. No intermediaries, ये भी समझ में आ गया. अब इसका एग्जांपल देता हूँ कितना कॉस्ट इफेक्टिव है ये. अब फॉर एग्जांपल हम लोग $1 लाख अगर यहाँ से लंदन में भेजना है सपोज, या यूएसए भेजना है $1 लाख अगेंस्ट इंपोर्ट, कुछ भी भेजना है $1 लाख, तो कितना कॉस्ट आएगा? इट विल बी गुड अमाउंट, राइट? $1 लाख भेजना है तो हम लोग की बैंक का चार्ज आएगा, देन फॉरेन बैंक चार्जेस विल आल्सो बी देयर, राइट? अब अगर हम लोग क्रिप्टो ब्लॉकचेन यूज करते हैं
तो I can show you with proof $1,00,000 ट्रांसफर करने का कॉस्ट लेस देन $2 आएगा. लेस देन $2 में आप $1,00,000 का वैल्यू ऑफ क्रिप्टोज कैन बी ट्रांसफर. इट इज सो कॉस्ट इफेक्टिव एंड फास्टर. फास्ट कैसे? सेम सिंगल लेजर में दोनों का अकाउंट रहेगा. पूरे वर्ल्ड का एक डेटाबेस, क्रॉस बॉर्डर कुछ नहीं. देयर आर नो बॉर्डर्स एट ऑल. सो इतना फास्ट रहेगा. So this solves the problem, and this is only one of the use case. आपको आगे जितने यूज केस बताएंगे, चाइना में और सिंगापुर में काउंटरफेट मेडिसिन को काउंटर करने के लिए भी अभी ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं. So this is what. Now we'll proceed. There are question and answers. तो आपके माइंड में अभी क्वेश्चन आए होंगे. Where it resides, basically. Right. Where it resides. So where does it reside? वो कहाँ पर रहता है? तो मैंने जैसे बताया, it resides in more than one computer. All connected computers, all connected nodes who act as one system. How they act as one system हम लोग आगे देखेंगे. Who manages it, basically. Yeah. So who owns this? this? Who owns this? Just a minute. Bharat bhai, just Who owns this open ledger? So no one owns. सब लोग इसको, it resides everywhere. सब जगह इसमें रहते हैं, but no one owns it. This is the magic. Who maintains this? Everyone maintains. जिसके भी पास वो ब्लॉकचेन है, he has to maintain. अब why everyone will maintain? Why अभी मेरे कंप्यूटर में मैं नोड बना दूं इसको और ब्लॉकचेन डाउनलोड करके मेंटेन करूं, तो कैसे? तो मेरा कंप्यूटर का टाइम यूज होगा, मेरा खुद का टाइम यूज होगा. माय इलेक्ट्रिसिटी विल बी स्पेंट ऑन दिस. तो कॉस्ट इज अटैच्ड टू इट. व्हाई आई शुड मेंटेन इट, एंड व्हाई आई और व्हाई एवरीवन, व्हाई अदर पीपल विल मेंटेन इट. तो इसके लिए इंसेंटिव ड्यू होता है. If I am maintaining it, then I am eligible for incentive. But no one owns it, तो कौन देगा मुझे incentive? So there is a system. Blockchain is creating cryptos through cryptography, and they reward me to maintain it. This is basic concept. हम लोग और डिटेल में जाएंगे आगे. Let us proceed fast. So who can change it? Who can change it? We have seen कि ब्लॉकचेन में एक कंप्यूटर कोई चेंज नहीं कर सकता है. सब every node will have to agree for the change, तो ही हम लोग इसमें चेंज करें. जितना अभी तक लर्न किए, अगर इतना everyone should be clear about this, then we should proceed. अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है, this is the base of blockchain. अगर आप इसमें अंडरस्टैंड कर दिया, तो आगे का भी आपको सुनने का जरूरत नहीं है. You can relax and you can make your own research. But I'll tell you, आगे की स्लाइड्स जो है वो बहुत ज्यादा रिसर्च करके मैंने बनाया हुआ है. So better you stick to it. And आपके कोई क्वेश्चन है तो we can take up. Madam, let us proceed. Yes, sir. So how, see, you said no one can change and everyone together can change it. So there is a single universal ledger can be distributed at the same time? Yeah, very good question. मतलब मैंने जो बताया कि एक सिंगल लेजर है, एक ही लेजर है पूरे वर्ल्ड का. So how it will be distributed at the same time? So
सिंगल यूनिवर्सल लेजर बट डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सेम टाइम. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है. ये जो पिक्चर है, ये फिगर है, ये विटालिक ब्यूटेरिन ने बनाया हुआ है. विटालिक ब्यूटेरिन is a genius, living genius, who has developed Ethereum blockchain. उन्होंने ब्लॉकचेन को एक्सप्लेन करने के लिए ये हमारे लिए बनाया हुआ है. सो लेट अस अंडरस्टैंड. तो ये जो फर्स्ट फिगर है, ये है सेंट्रलाइज्ड. इसमें दिख रहा है कि सेंट्रलाइजेशन है. पूरा डेटा यहाँ पर है. अगर ये हार्ड डिस्क यहाँ का क्रैश हो गया तो ये सब नोड जो है वो बेचारे अनाथ हो जाएंगे. राइट और रॉन्ग? करेक्ट. राइट. सो फिर बाद में आया डिसेंट्रलाइज्ड. मतलब ये एक डेटाबेस को अलग अलग डिपार्टमेंट्स, यू कैन से एग्जांपल दे रहा हूँ. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसमें परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, प्रॉफिट सेंटर डिस्ट्रीब्यूट करके वो डिसेंट्रलाइज किया जाता है. बट ब्लॉकचेन में क्या होता है? This is the blockchain. This is the distributed network. Distributed network के अंदर क्या होता है? All nodes are connected. देखिए कितना beautifully each and every node is connected to each other. And आप beauty समझिए इसका कि each and every node is having same database at the same time. They are having same database at the same. This is the beauty. और इसमें से सपोज कि कोई कंप्यूटर फेल हो गया तो क्या ब्लॉकचेन को फर्क पड़ेगा? नहीं. इसमें से 100 कंप्यूटर खराब हो गए तो ब्लॉकचेन को फर्क पड़ेगा? नहीं. बिकॉज रेस्ट अदर्स हैव सेम डेटाबेस एंड नोड्स कैन बी एडेड. Nodes can be added. They can they can come in and go out. विपुल जी का और कुछ क्वेश्चन है. Let us take it. Yeah. What sort of data will be stored in each of these nodes? Maybe one example you gave is maybe, say the bank transactions, or so what are the other examples? Because what is the need of storing the data in all these nodes at one go? What could be the use case of it? In fact, Very JP, I very would also, JP, this question came in my mind immediately when you showed this picture. Okay, what if all the UK accounting concept and India concept is on the same page? What conversions we are doing? So if database is maintained on the same platform, you can read the same financials. That's something like using blockchain technology, we can use the financials also in the annual report. Absolutely. So can we not have Absolutely. that? One single universal ledger. Single universal ledger can be. So to answer Vipulji's, it's a very important question. इसमें apart from financial transaction, this can be used to track. इसमें ना so many, you cannot restrict the use. इसमें supply chain management के लिए use हो सकता है. So supply chain का पूरा data you can feed into blockchain and you can manage it. फिर इसमें आप So you mean to say, JP, that Flipkart and Amazon is working on a blockchain technology? Right now, no. Right now, they are not working on blockchain. But there are some e-commerce platforms. Some they are planning. Some are planning blockchain. Walmart has already installed 200 ATMs in their store. So that is separate. But to answer Vipulji's question, इसके अंदर क्या क्या डेटा फीड हो सकता है? So इसमें हो सकता है एजुकेशनल डेटा, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, they can upload data of their students, and since this is open, it can be verified by any other person. So the student don't have to prove that he is holding
this kind of degree. He can just say that this is my address of my degree, and then the employer or airport authority, visa issuer can go to that address and they can identify कि ये genuine degree है. नहीं तो अपना जितना भी अभी डिग्रीज है उसमें 30%, you can say 20% are fake degrees. Can you believe right now 20% degrees are fake? CMA भगवान के दया से ऐसा नहीं है. हाँ, so sorry to interrupt, JP. When you spoke like this, immediately it struck me that UDIN itself is a blockchain concept, right? UDIN now Right. generated the unique document identification, So and it can be verified. yeah, so CA Institute must start using this technology. And to answer Vipulji's question, this kind of technology can be what I said earlier. It will penetrate into each and every aspects of our life. Each and every aspects. Bharat So bhai that also, is- Bharat bhai also has a question. Owner of the data. Yeah, please. Owner of the data can only chain or anyone else. Please elaborate. No, owner. There are no owners at all. That is हाँ, also बहुत अच्छा question, अच्छा आया, because this is concept. This concept is not clear. That means so blockchain is not owned by any one person. There are no owners. Barabar? Whatever transactions and whatever data is uploaded, that is gone out of the hand of the creator. अभी suppose मैंने कोई create किया है blockchain, and if I float into the universe, then I will not be able to control it. So I will not be able to manage it. I will just maintain it. And there are other nodes also who will have to maintain that database simultaneously. And if I want to make a change, then in Bitcoin का बात कर रहा हूँ, Bitcoin में अगर कोई change करना है, कोई भी चीज, तो there is a concept of 95% consensus. It is provided in open source code. उसका जो code लिखा है उसमें ही mention किया है कि 95% अगर vote in favor आता है, then only the change will go through, otherwise not. तो इस तरह से owner इसमें कोई है नहीं, ओनर का डेटा ऐसा कोई नहीं है. इट इज डेटा ऑफ एवरीबडी, एंड इफ इट इज स्टोर्ड ऑन ब्लॉकचेन देन इट इज आउट ऑफ माय हैंड. सेकेंड थिंग, इट कैनॉट बी seen also. It cannot be seen by anybody else because वो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू एनक्रिप्ट हो गया रहता है. It cannot be misused. That is what I'm saying. So Okay. let us proceed. So JP, there was one more question from Dimple. Dimple Lakhan is asked how to extract the data, and believe me, Vipul also asked the second question: can there be privacy issue? Because if data being openly available for all to, which I think you answered, it is encrypted data. It is not available to the public as such, but it is freely available. See, open for with who has the authority to get into. Like I think very important. WhatsApp, if I accept your contact, then only you can send me that message. So there are two type of blockchain. One is private blockchain and other is public blockchain. In public blockchain, nobody, absolutely nobody can see others data. मतलब वो ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, क्या ट्रांजैक्शन हुआ है. सपोज एक क्रिप्टो करेंसी मैंने बाय किया और आपने सेल किया, दैट ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड एंड इट विल बी ओपन टू एवरीवन कैन वेरीफाई इट. और ये इतना ट्रांसपेरेंट है, मैं बताऊं आपको कि गवर्नमेंट ऑल्सो कैन वेरीफाई के विच एड्रेस इज होल्डिंग व्हाट टाइप ऑफ करेंसीज. इतना ट्रांसपेरेंट है. But privacy is maintained in public blockchain. I am telling, private का बता रहा हूँ. Public blockchain में privacy is maintained in such a way that my address will be revealed, but you will not come to know unless I tell that this is my address.
मतलब मैं ट्विटर पे जाके अगर बोलूं कि दिस इज माय एड्रेस, देन ओनली पीपल पब्लिक विल नो. अगर मैं दूसरे किसी को नहीं बताऊं कि दिस इज माय एड्रेस, तो नोबडी विल नो. बट वो एड्रेस पे क्या है, उस एड्रेस के अंदर क्या है, वो सब आप देख सकते हैं. तो प्रैक्टिकली जब हम करेंगे, मेटामास्क में दिखाऊंगा आपको, एनएफटी दिखाऊंगा, उस प्रैक्टिकल सेशन में हम ये पूरा कवर कर लेंगे. बट सेकंड क्वेश्चन विपुल जी का, प्राइवेट ब्लॉकचेन जो है, प्राइवेट ब्लॉकचेन में डेटा कैन बी एक्सेस्ड. क्यों? क्योंकि प्राइवेट, मैंने एक ब्लॉकचेन बनाया है, मैंने किसको एक्सेस दिया है, नोड बनाया. किसको नोड बनाया? मेरे 3 स्टाफ को एंड माई सेल्फ. सो वट एवर डेटा इज देयर इन दैट प्राइवेट ब्लॉकचेन, that all of us will be able to see, and if someone changes, I will have to authorize it and it can be function in that way. But that data I will not be sharing to anyone else, and that is why it is called private network. So private network mein, if I am putting data of supply management, से मेरी कंपनी है supply management company, because एक VeChain नाम का एक ब्लॉकचेन है, VeChain, it is providing solution of supply management. उसका शॉर्ट फॉर्म है VET. वो जो कॉइन है उसका, वो कॉइन ट्रेडिंग होता है, बट वो कॉइन के पीछे ये ब्लॉकचेन है. दे आर प्रोवाइडिंग सप्लाई मैनेजमेंट. वो सप्लाई मैनेजमेंट जिस कंपनी ने वो उसके ऊपर डिफाइन कर दिया, तो दैट पर्टिकुलर कंपनी विल बी एबल टू सी, दूसरा कंपनी विल नॉट बी एबल टू सी द डेटा. सो प्राइवेसी इज मेंटेन. Slowly we will come to that concept also, but we'll let us proceed. Vitalik, so this is ये जो concept है, अभी इसमें कैसा है कि JP, Deepak Kantara has asked, nodes are the owner of data. So, but if 50% nodes come together, they control your data, and that's the possible threat every major players are trying to solve out. So that is what he has asked. That depends. Yeah. So very important. So nodes इसमें हर एक ब्लॉकचेन में डिफाइन किया हुआ रहता है मिनिमम कंसेंसस, मिनिमम कंसेंसस. बिटकॉइन में, बिटकॉइन इज प्योर डिसेंट्रलाइजेशन. बिटकॉइन में 95% कंसेंसस चाहिए टू मेक अ चेंज. किसी ब्लॉकचेन में लेस देन दैट चाहिए. तो ब्लॉकचेन हैज टू हैव three virtues. One is scalability, other is security, and third is just a minute. We just remove that slider. So anyway, that slide is removed. So out of 3 virtues, every blockchain has compromised in at least one. मतलब सब लोग ये ट्राइलेमा बोलते हैं, ब्लॉकचेन का ट्राइलेमा. So if a blockchain is secured, then it will not be scalable. If the blockchain is scalable, then it will not be secured, centralized. तो सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज ये भी रहता है. तो 3 वर्च्यू में से एक वर्च्यू को हर एक ब्लॉकचेन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. बिटकॉइन इज मोस्ट सिक्योर्ड, बट इट इज नॉट स्केलेबल. उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते एज ऑफ नाउ. अभी उसमें कंसेंसस अगर आ जाएगा, अगर कोई प्रपोज करेगा तो वो चेंज हो सकता है, उसमें स्केलेबिलिटी हो सकती है. बट राइट नाउ इट इज नॉट. उसका सप्लाई लिमिटेड है 21 मिलियन. So
So JP, I what hope that up to answers. what time transaction can be stored under the blockchain? Is it time? Yeah, before that, Hmm. yeah, before that, one see this kind of concept, blockchain का जो concept है, ये concept this reminds just like Brahma. Correct. राइट, तो कितना कोई भी नोड आए कोई भी नोड जाए ब्लॉकचेन को फर्क नहीं पड़ेगा। तो ब्लॉकचेन जैसे अभी एक संस्कृत का श्लोक है, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते, मतलब पूरे में से पूरा निकाल दो। वेरी डिफिकल्ट कंसेप्ट, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट ब्रह्म इज डिफिकल्ट कंसेप्ट बट ब्लॉकचेन इज नॉट। सो जिसको भी पहले अध्यात्म का स्टडी करना है, इन माय ओपिनियन वी शुड लर्न ब्लॉकचेन फर्स्ट। सो लेट अस प्रोसीड। विटालिक बुटेरिन ने बहुत ब्यूटीफुली होल कंसेप्ट एक सेंटेंस में बताया है, एक ही सेंटेंस में पूरा कंसेप्ट बता दिया है। ब्लॉकचेन आर पॉलिटिकली डिसेंट्रलाइज्ड, नो वन कैन कंट्रोल देम, आर्किटेक्चरली डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब no infrastructural central point of failure, but they are logically centralized. How they are logically centralized? There is one commonly agreed state and the system behaves like a single computer. मतलब ये जो सिस्टम है ये पूरा एक सिंगल कंप्यूटर के जैसे काम करेगा। कहीं पर भी कोई डेटा ऐड हुआ तो वो पूरे सब जगह ऐड हो जाएगा। And everybody has to agree, then only it will be added. भरत भाई તમારા સવાલનો જવાબ આપ્યો, સિક્યુરિટી, સ્કેલેબિલિટી એન્ડ ટ્રાન્સપરન્સી. Transparency it is decentralization. Okay. Decentralization. Yeah. So now the next question was, up to what time the transaction is stored? So transaction is stored permanently. Okay. You can say जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये ट्रांजैक्शन स्टोर रहेगा। Why? Because कोई भी नोड आएगा कोई भी नोड जाएगा, ब्लॉकचेन को फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रांजैक्शन will be stored permanently. So you mean to say, can it be used for illegal activities also? Yes, it can be used for illegal activities. This is the dark side. It is being actually used for such elements, used by such elements. It cannot be stopped, and that is why governments are against it and they want to control it, but they are finding it very, very difficult. So However, the blockchain is an open ledger. Okay. Yeah. So you mean to say, can transaction can be traced? Yes, definitely. Transaction, this is very important aspect. Transaction can be traced block by block, transaction by transaction. We can trace. हम लोग practically जब practical session रहेगा, तो I will show you how to trace the transaction. Blockchain के ऊपर transaction जो आता है, वो trace हो सकता है. अभी एक example, give one example to understand. हाँ, मैं वही दे रहा था. Yeah. So एक fraud हुआ था. Bitcoin 120,000 bitcoins were fraudulently taken by one couple, husband wife, एकदम young, 25-26 साल के, 2017 में उन लोगों ने फ्रॉड किया, बिटमैक्स से उन्होंने 120,000 बिटकॉइंस उस टाइम पे चोरी किए। अभी आज के तारीख में आप इमेजिन उसका वैल्यू कितना बड़ा है, $4.5 बिलियन। तो इतना फ्रॉड किया था उन्होंने। तो FBI एंड ACC वेर आफ्टर दिस। उन्होंने जब भी फ्रॉड होता है तो पता चलता है, दिस इज ओपन लेजर, तो ये पता चलता है कि ये एड्रेस के पास में ये सब कॉइन्स है, इट इज ट्रेसेबल। अभी
गवर्नमेंट ने उसके ऊपर नजर रखा, सीबीआई ने, एफबीआई ने नजर रखा। नवंबर में एक न्यूज आई थी कि आउट ऑफ 120,000 60,000 वेर मूव। तो वो फिर उन्होंने सर्च किया वेयर इट इज मूव, फिर वो मूवमेंट जो है वो पूरा ट्रेस किया उन्होंने, एंड दे वर वेरी स्मार्ट, दिस कपल वाज वेरी टेक्निकली वेरी स्मार्ट। तो उन्होंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन बनाए थे, और यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ पूरा ट्रांजैक्शन करके फिर उसको भी ब्रेक किया था। तो लेकिन कहने का मतलब है कि इट वाज ट्रेसेबल एंड सीबीआई कुड ट्रेस इट। एंड अभी एक 15-20 डेज बैक का एक न्यूज है, अभी जस्ट मैंने कवर किया था ये न्यूज, कि उसको उन लोगों को पकड़ लिया है। एंड यूएसए गवर्नमेंट इज नाउ होल्डिंग 120,000 बिटकॉइन in their own wallet। मतलब यूएस गवर्नमेंट इज होल्डिंग दैट कॉइन। वो कॉइन किसका है? दूसरे का है, तो देना चाहिए वापस, बट यूएस गवर्नमेंट इज होल्डिंग इट। और अभी लोग बोल रहे हैं कि टेस्ला के पास $2 बिलियन के बिटकॉइन है एट प्रेजेंट, इट इज डिक्लेयर्ड। तो यूएस गवर्नमेंट के पास उससे डबल है, एंड यूएस गवर्नमेंट इज अगेंस्ट दिस। सो वो अगेंस्ट जो है वो अलग बात है, यूएस गवर्नमेंट इज नॉट टोटली अगेंस्ट इट। यूएस में काफी सिटीज में जो मेयर्स है, यूएस के सिटीज के काफी मेयर्स, they are taking salary in Bitcoin. Can you imagine? They are taking salary in Bitcoin. Mayors. अभी तो सिटी कॉइन है, न्यूयॉर्क सिटी कॉइन आ गया है। People are paying taxes in Bitcoin now. So let us proceed. ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो शायद हम लोग बार बार ट्रैक चेंज हो जाती है। So मेरा तो अभी एक देखो, time was 5 to 6:30. I will ask the last question for the day. Okay, how blockchain works against centralization? This is my last question for the day because it's a very interesting topic. We could understand last question. Crypto and blockchain. This will be last from my this thing, and we can also have the next session covering the NFT and the contract, smart contract and everything, because conceptual clarity is important. जी आप ऐसे रन थ्रू करोगे, रश थ्रू करोगे तो मजा नहीं आएगा। So मेरा लास्ट क्वेश्चन अभी आप आज के लिए आप दे दीजिए कि how blockchain works against the centralization, because you said it is a distributed technology and everything is connected. तो वो against centralization क्या कुछ कोई एग्जाम्पल अगर देना चाहेंगे तो? Yeah, very important. How it works against. So there is a concept of डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रस्ट। ये पहले हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रस्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रस्ट का एक एग्जांपल लेता हूं मैं, किटी पार्टी। बिलीव मी, प्लीज बिलीव मी, आई हैव नॉट गॉन टू एनी किटी पार्टी। तो ये सब सुनी सुनाई बात है, एंड कुछ लोगों से पूछी पूछाई बातें हैं, तो आप अंडरस्टैंड कीजिए किटी पार्टी, व्हाट हैपेंस इन किटी पार्टी। Kitty party itself shows that the girls and women are there only. Right. Right, sir. किटी वर्ड से ऐसा लगता है कि वो खाली फीमेल के लिए बना हुआ है, मेल लोगों को पार्टी करने का उधर एंट्री नहीं है। बट देन नाउ फिर बुर्का पहन के न्यू ट्रेंड कैन स्टार्ट नाउ। So the parallels of blockchain, how this example is absolutely very important. This scanner, Yeah, that is why this I have to give this kind of example to make the things straight. So इसमें कैसा है, किटी पार्टी में क्या होता है, 10 लेडीज आती है, 10 लेडीज, they put 1,000 rupees on table each, 10,000 हो गया। Yes. Then there is a draw, and lucky lady wins whole amount, 10,000 उसको दे दिया जाता है। Correct. अभी out of remaining 9, suppose 1 या 2 जन सोचे कि ये विनिंग लेडी है, ये जरा ओवर स्मार्ट है,
इसको हम लोग जरा डिफ्रॉड करते हैं. Can they do that? No, They not cannot. allowed. Not allowed. So why they cannot do? Because the winning lady puts her trust on whole remaining 9 ladies, right? So her trust is distributed trust. So that is why this is a distributed trust. So आपने मतलब ये समझ में आ गया ना, distributed trust. एक सिंगल लेडी या 2 सिंगल लेडी या 3 मिलके भी विनिंग लेडी को डिफ्रॉड नहीं कर सकते, बिकॉज हर ट्रस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. So this is the concept of distributed trust, and this happens in blockchain. The trust is distributed. Centralized finance में क्या होता है? We trust third party bank, which is backed by central bank, which again is backed by government sovereign guarantee. Same is with centralized insurance, centralized land records, centralized power. In blockchain, you are not required to put trust on anyone. Blockchain में किसी के ऊपर ट्रस्ट रखना जरूरी नहीं है. Winning lady don't have to put trust on any single lady. उसका ट्रस्ट पूरा सिस्टम के ऊपर रहता है. So trust no one. Everybody is answerable to everyone. So actions are triggered automatically. So this is distributed trust. तो आज के लिए अगर सभा समाप्त करना है. Over to you, You Daman tell bhai. me. It was really wonderful. See, conceptual clarity is important. Participant will agree that you have so nicely explained with the examples. पहले ऐसा लगता था कि ये कुछ नाइटमेयर जैसा है, क्या है क्रिप्टो, क्या है, तो अभी धीरे धीरे समझ में आ गया. अभी इनफैक्ट करेंसी है कि एसेट है, वो तो नेक्स्ट लंबा चलते रहेगा क्वेश्चंस अपना. बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग. आगे की स्लाइड्स जो है ना, वो थरो रिसर्च करके बनाई है, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है स्लाइड्स. हमें रखना पड़ेगा नेक्स्ट सेशन, हम रख Yes. लेंगे. दमन जी, तो आज का तो वोट ऑफ थैंक्स दे दीजिए, और नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू पार्ट 2 जेपी. Yes. that's what it's my. And then after JP part 2, we are thinking on how to invest in a volatile market. My friend Janak Lotwala will be coming out with the solutions. I mean, his experiences, the way JP has shared his experience of making research on these crypto and blockchain and so on and so forth, because बाकी का तो अभी बाकी है सुनना आपसे. So over to you, Daman bhai. थैंक यू वंदना बहन, इट्स माय प्लेजर टुडे. और मेरा जब भी स्टार्ट हुआ तो मेरा गाना याद आ गया था मुझे. ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ. मतलब ये डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन, वो बिटकॉइन क्या है, कैसे था, कैसे हुआ, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था. लेकिन बिकॉज ऑफ योर स्लाइड्स एंड योर ल्यूसिड इंटरेक्शन जो भी हुआ, डिस्कशन अपना, उससे आई लर्न एवरीथिंग. नॉट लव एवरीथिंग बट समथिंग विल आई लर्न. और ऑल आर एग्री विथ इट कि जो जेपी सर ने जो बताया, तिवारी सर ने, कि उसमें ये बिटकॉइन जो पहले कंसेप्ट था, बिटकॉइन ही दिखता था, बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा. Now we come to conclusion that there is a cryptocurrency. It's not only Bitcoin, and there are the decentralization, or many these companies and every government in the world, they are accepting it. All India is also accepting this. So I'll, on behalf of SGF, I give you the heartily vote of thanks to all of you, JP Tiwari sir and Vanda madam, for mentoring a very good questions. And we hope that again you will continue with it, and we'll learn more. And I'll give you request everybody to join your hands and give the claps to both the speakers and the moderator. All thank you participants. All the members and participants, I also thank you, all of you, to join the session. Thank you all. And Thank you very Bharat much. Thank you. Bharat bhai, last Thank you word all. of wisdom. We have Bharat bhai with us, forensic.
Yes, sir. हमारे मेंटर भरत भाई तुम्हारा लास्ट वर्ड ऑफ विजडम 2 मिनट अनम्यूट करो. I am not an expert on this subject. JP, yes, I mean, from the from security point of view, there have been attacks. JP stop share. Ah, Sorry, huh? Stop share. Share screen में एक stop minute. करो मैं. Stop करो share screen में. हाँ. Thank you. Over to you, Bharat bhai. I'm sorry. I don't have too much of knowledge on this, but yes, I can tell you from the security point of view that there is encryption and everything, but still people have been able to hack by phishing attacks, and there is a 51% attack also, which I think JP can talk about it later in his next session. So still all the governments are trying to control their own centralized economies, because this, once it comes, it will be one world actually, and one currency, that is Bitcoin. Yes. In essence. So Correct. everybody wants to control their gold reserves against their currency, and once you have one currency like Bitcoin, there will be a bigger challenge for all the economies also. That is what you see. Correct? Am I right? correct. Absolutely right. Absolutely. There are hacking and frauds and all that. Yes. So things will evolve. So we are going into that phase of evolution of one world and one currency. That will be Bitcoin future. Deepak, you are already running some this thing like what you shared with us, the Ethereum Etherscan. So can you just brief it about us? 2 minutes. तो मैंने जो अभी भेजा चेक में उसकी बात कर रहे हैं मैम आप. Yes. What you are doing there? मतलब you are also in part of that system, or you are just following that? No. This is the Etherscan. This is a website of Ethereum blockchain network. Okay. This is the back side of the Ethereum network. मतलब उस पे क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है अभी भी इस टाइम पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई भी इथेरियम नेटवर्क पे कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो लाइव उस पे दिख रहा है. जैसे सर ने कुछ बताया था ना इसके बारे में कि ट्रांजेक्शन सब दिखता है, तो मुझे इसका नॉलेज था पहले से, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया उसको. ऐसे करके आप उस पे जाके आप देख सकते हो कि एक ब्लॉक में कितने ट्रांजेक्शन है, कौन से ट्रांजेक्शन है और किसने किसको क्या दिया है, किस तरह के ट्रांजेक्शन, सब कुछ यहाँ पे दिख सकता है. बहुत अच्छा. Good. JP Tiwari, you have done a wonderful job today by explaining things to all the laymen chartered accountants here on the crypto side, in a very simple and lucid manner. So that was wonderful. I think it was very important for our first kindergarten students. Oh, because it is. we are your students, sir. And it's very difficult to understand. He has made it so simple, and the examples were very important. Example તમે કેવા આપો છો, how you make it to very simplified way. The way you word also you use technical side પર જવા કરતા એનું concept clear કરે આપ્યું કે blockchain it can be that 3 picture is very important, but that what I will remember now later on also. So we will look forward to the next session of yours. We'll be posting you the time as early as possible. Yeah, and, it was a nice session, ma'am. Yeah, you can actually we are just beginners, no? Because right now we need to go to reach to NFTs and metaverse. That was a very different area where we are actually going to purchase land on the metaverse area. We are just working on it, so that's why we need to move ahead. Institutes need to really do work hard for this thing, because we are literally ahead of these things. All world is nearly going ahead. I'll tell you one thing. Saudi में 77% people know all these concepts. Saudi में. Okay. And in South Africa also there are universities who teach blockchain. There is no formal education in our schools and all that, but we should have this kind of formal education. But Africa learning because of the fraud. No, forget the South.
not exactly, but fraud is one aspect. I do not negate it. That is definitely there. Fraud is there, but you know, this is the benefits of this war में अभी जो war हो रही है सर फ्रॉड को लेके मैं ये बोलूंगी, सी मेटावर्स अगर आप अभी क्या ऐसा समझिए कि एक दुनिया एक अलग जगह पहुंच गई है एंड हम लोग आज सिर्फ क्रिप्टो की बात करें, बट Correct. हम मेटावर्स तक जब पहुंचेंगे ना, बिकॉज आई एम आल्सो पार्ट ऑफ दिस क्रिप्टो एंड ऑल फ्रॉम सो मेनी मंथ्स और ईयर, आई एम इनटू इट इन ट्रेडिंग कहो, क्रिप्टो कहो, ब्लॉकचेन कहो, एनएफटी कहो, एंड नाउ आई एम गोइंग टू दुबई फॉर दिस थिंग. सो great. लग रहा है. तो मुझे ये बोल रहे मेटावर्स जो एक दुनिया है ना, आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल. जस्ट जस्टिन बीबर का एक शो हुआ था, जस्टिन बीबर, आई माइट बी यू हर्ड अबाउट इट, इन नवंबर yeah, दिसंबर. तो उनका जब शो हुआ तो इट वाज दैट टाइम मेटावर्स पे पहला शो उनका हुआ. आप जैसे बोलोगे अगर उसका टिकट परचेज करने के लिए जाएंगे तो यू हैव टू बी, आपको फर्स्ट रो में बैठने के लिए यू हैव टू पे नंबर ऑफ अमाउंट. यू कैन इमेजिन, मैं एक एग्जांपल बोलूंगी 1 लाख के एक अमाउंट का उसका टिकट होगा, बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस मेटावर्स एवरीवन इज ऑन द फर्स्ट रो. क्योंकि आपको जस्ट एक गॉगल्स वेयर करना है, दैट जैकेट विल बी वेयर एंड दैट पर्सन जस्ट बी एट होम, वो उसकी जगह पे उसकी दुनिया क्रिएट करके है और जहां से हम लोग अटेंड कर रहे हैं. यू विल फील लाइक, आपने आई थिंक रावण मूवी देखी होगी, दैट इसकी शाहरुख खान की. हाँ, तो वो दैट इज द रियल केस. दिस इज हैपनिंग नाउ. अगेन यू हर्ड अबाउट ऑन 6 फरवरी तमिलनाडु के कपल ने शादी की है. उसकी सबसे बेस्ट थिंग ये है सर, एक्चुअली मेटावर्स इज कनेक्टिंग हिस्ट्री विथ फ्यूचर. दिस इज द लाइन आई रियली मेंशन ओवर इट, बिकॉज उसमें उस लड़की की इच्छा थी कि उसके पापा उसका कन्यादान करें. And if you can search on the YouTube, you will get this information that couple married on metaverse. उन्होंने सारे उनके रिश्तेदारों को metaverse पे शादी के लिए, because they are from the IT companies, और उन्होंने उनको गॉगल्स एंड एवरीथिंग, उन्होंने लिटरली फूड भी एंजॉय किया इन दैट वे. और उसमें उसके पापा का एक डिजिटल अवतार क्रिएट करते हैं मेटावर्स पे, जिसके थ्रू उनकी मेटावर्स पे जब क्रिएट होता है ना, तो उसको जो एनएफटीज लगते हैं. नाउ आई जस्ट गो अपवर्ड डाउन. आपने क्रिप्टो बताया, मैं ऊपर से नीचे बता रही हूँ कि मेटावर्स, एनएफटीज, फॉर दैट यू रिक्वायर क्रिप्टोस, फॉर दैट यू रिक्वायर ऑल बिटकॉइंस, इथेरियम्स एंड ऑल. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इट. ओके, तो हम बहुत लिटिल बेबीज में हम सब अभी यहाँ सीख रहे हैं, बट वहां पे किया. तो वहां पे उनका अवतार ने उनको डिजिटली उसमें उसका कोडिंग करके पापा का पूरा मतलब कोडिंग किया कि उसके पापा कैसे हैं, उनके बोलते कैसे हैं. तो उस अवतार ने डिजिटल इसमें मेटावर्स पे उसका कन्यादान किया जो वो चाहती थी. सो ओके, सो दैट्स रिमाइंड, मतलब एक पिक्चर है कि ऐश्वर्या राय का पूरा रेप्लिका दिखता रहता था. आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द मूवी, बट हर जगह पे ना उसका वो एक डिजिटल इमेज आ जाता था. आई डोंट रिकलेक्ट, बट ऐसा मैंने मूवी 5-6 years back I had seen. यस, ऐसे बहुत सारे मूवीज हुए. आपने टेक्नोलॉजी तब से थी, मतलब हम लोग वो एक मूवी थी जिसके अंदर क्या नाम था उसका, जिसमें उसके पैर नहीं थे, लेकिन वो आई फॉरगॉट दैट नेम. इट्स अ फेमस मूवी जिसमें वो जब डिजिटल उसमें जाता है वो सो के, तो वहां जाके उसके पैर रहते हैं, सब कुछ वो उस दुनिया में जाता है. वो एक मूवी आई फॉरगॉट द नेम. अवतार, आई फॉरगॉट नेम. और तो नाम ही अवतार था मूवी का, बट एक आई थी, मुझे भी नाम अभी फर्स्ट टाइम मिस आउट हो रहा है. दैट वाज ऐश्वर्या का पूरा पिक्चर ही दिखते रहे आपको अलग, मतलब वो डांस करे, सब कुछ करे, वो पूरा इमेज ही सब कुछ करे. यस दैट डबल रोल ऑफ ऐश्वर्या. जीन्स. हाँ, तो मतलब वो कितना साल हो गया जीन्स को आते? तो बोर्ड इट्स ऑलमोस्ट इन 90s, 92, 93 4 की बात है. तो तभी उस बंदे ने तो वो क्रिएशन तभी किया था ना. यस जो अभी क्या होता है रियलिटी है. हाँ, अरे आप अवतार जो बोल रहे हैं ना, तो अवतार ये तो कितने टाइम से अभी नारद मुनि का अवतार पूरी दुनिया में, पूरे सब जगह वो भ्रमण करते रहते हैं. हमारे पुराणों में आता है. व्हाट इज इट? It is avatar. It is just like digital only. तो कहीं भी प्रकट हो सकता है, कहीं भी प्रकट हो सकता है, कहीं भी जा सकता है. इसके लिए वही आपको जब एनएफटीज का एक कंसेप्ट अगर यही है ना कि जब आपको मेटावर्स में जो भी एनएफटीज पर आपको एक अवतार क्रिएट करना है, तो उसके लिए अलग अलग एनएफटीज बन रहे हैं. फॉर क्रिएटिंग दैट एनएफटीज यू नीड क्रिप्टो, बिकॉज आप वहाँ पे डॉलर्स में, रुपीस में किसी चीज में खरीद नहीं सकते. तो क्रिप्टोज नेसेसिटी होगी वहाँ की.
ओके, तो दिस इज अनदर वर्ल्ड, दिस इज रियली, अगर मैं आज से मेरे बच्चों को सोचती हूँ कि 10 साल के बाद 20 साल के बाद जब वो रहेंगे, मतलब वो जब जाना चाहते हैं पार्टीज में, तो दे विल से मम्मी मुझे एनएफटीज पे ये परचेस करना है, देयर इज नथिंग इन देयर हैंड राइट नाउ, बट वो सब कुछ